कैसे आप सब लोग मैंने ये यहाँ पे योग के तो क्यों बोला भाई, क्या यार मैं पागल हो गया हूँ अब तो। और कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं। इतनी सारी गेम्स खेलता हूँ, गेम ही याद नहीं रहती है। अब वैसे आप बैकग्राउंड म्यूजिक देख के समझ ही गए हो, आई मीन सुन के, क्या आदमी में बैकग्राउंड म्यूजिक कोई देख के सकता है यार, मीन्स कुछ भी। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं गेम के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं हॉगवर्ट्स ऑफ लेगेसी। चलो फटाफट से बढ़ते हैं गेम के अंदर। दिमाग चल जा मेरे भाई, चल जा, क्या चल रहा है, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं भाई। चलो छोड़ो, रहने दो, हम फटाफट से बढ़ते हैं गेम के अंदर। मैं पागल हो गया हूँ। तो हम आगे हैं जी, फटाफट से चालू करते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारे नए स्पेल्स सीखे थे। हॉगवर्ट्स ऑफ लेगेसी में हम लोगों ने हर्बोलॉजी की क्लास अटेंड करी थी और साथ ही साथ हमने एक नया स्पेल सीखा था जिससे भाई बंदे की ना सारी वो क्या बोलते हैं यार, हथियार गिर जाते हैं, ऐसा कुछ था। तो अभी हम लोगों के पास बहुत सारे टास्क है, तो देखते हैं हमारे पास कौन से टास्क है और उनमें से कौन सा हमको जाके कंप्लीट करना है। तो चल फटाफट से बढ़ते जी, चलिए शुरू करते हैं जी। हाँ ना, बढ़ते हैं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई फाइनली हम लोग गेम के अंदर आ गए भाई। 10 साल बीत गए ऐसा लग रहा है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं भाई। मेरे को ये ना टाइम पास बिल्कुल पसंद है। कौन बोलता है नहीं पसंद है? टाइम पास बहुत पसंद है, बस करना नहीं आता। तो चलो भाई फटाफट से देखते हैं हमारे पास कौन से टास्क है करने के लिए। फटाफट से चलते हैं। तो देखिए भाई, हम लोगों के पास में अभी दो चीजें, सिर्फ दो चीजें भाई सब। तो भाई देखो, हमारे पास दो चीजें। पहली चीज है कि हमको ना नैटी से मिलना है जाके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो बाहर हमारा इंतजार कर रही है। और दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पोशन क्लास जाके अटेंड करें भाई। मतलब उसमें से जादू टोना, साइंस लैब एकदम मस्त। पर देखो मैं सोच रहा हूँ, को लग रहा है उसके पैर में दर्द हो रहा होगा, वो कहाँ खेत में बैठेगी। इससे अच्छा चलो पहले उससे मिल लेते हैं। चलो भाई चलो। ओ भाई साहब, ये भाई देखो भाई, ये देखो ये भाई हॉगवर्ट्स से कितना दूर गई है। अब मैं बताओ कैसे जाऊं भाई। मेरे को ना मेरा इरादा बदलने में मजबूर कर रही है ये, पता है। मेरा इरादा बदल जाएगा, चेंज कर दूंगा, मैं पोषण क्लास चले जाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। पाजी हॉगवर्ट्स के बाहर है, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है, सुंदर है भाई हॉगवर्ट्स, कुछ भी बोलो। पर भाई पुराने किले की तरह लगता है भाई। मेरे को ना ये गेम पागल कर देगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं उधर जाता हूँ तो मेरे को ये लोग बोलते हैं कि इधर आना है, मैं इधर आता हूँ तो मेरे को बोलते हैं उधर जाना है। पर अभी फाइनली मेरे को सीधा रास्ता मिल गया, तो अब मैं जाऊंगा। वो भाई कितना बड़ा है हॉगवर्ट्स। मैं हर बार यही क्यों बोलता हूँ भाई, कुछ क्या करूँ भाई, बाहर आते ही मिलती ही ये लाइन है बोलने के लिए। कितना बड़ा है हॉगवर्ट्स भाई रे, कितना बड़ा हॉगवर्ट्स भाई साहब, ऐसी की तैसी हो गई, इतना बड़ा हॉगवर्ट्स। आए देख लो भाई कितना बड़ा हॉगवर्ट्स। कितना बड़ा हॉगवर्ट्स भाई, कितना बड़ा हॉगवर्ट्स। ओए होए भाई, कितना बड़ा हॉगवर्ट्स। और तुम भी यहाँ पे रुके हो, तुम कैसे रुके हो? तुम तो टूटोगे। मूनस्टोन ना तुम्हारा नाम मूनस्टोन ही है ना? टूट तो नहीं रहा तेरी, टूट भाई। नहीं टूट रहा, चलो छोड़ो, रहने दो भाई, बनने का मन नहीं है टूटने का आज। लेट्स गो पापे भाई। एक तो कहाँ सुनसान जंगल में मेरे को बुलाया है इसने मिलने के लिए। डर लगता है ना, बेचारा डर जाएगा बच्चा भाई। सोचो काली अंधेरी रात में यहाँ से कोई भूत नहीं निकल गया भाई। जैसे ही बोला तभी कौवे निकले हैं भाई। जरूरी था ऐसे टाइम पे आना। डर गया ना बेचारे बच्चे। वो कहाँ पे गई है भाई नैटी तू भाई? इतना पैदल मैं कैसे करूँगा, मेरे को भाई सांस फूल गई मेरी। इतना दूर आके रुकी है, एक तो पागलपंती अलग लेवल। आई शुड इन्वेस्टिगेट वाई ब्रदर, कुछ खतरनाक मामला हो गया क्या? चलो फटाफट चलेंगे भैया। भाई वो चॉम्पिंग कैबेज है ना, कोई आएगा लड़ने ऐसी की तैसी, तुम पर चॉम्पिंग कैबेज ही फेंक दूंगा। आओ बदतमीजी करो। ओहो देख रहे हो मैडम को, मैडम ये देखो, ये मैडम है।
my friend. देख रही हो ये मैडम कहाँ है? हॉगवर्ट्स कहाँ है? ये मैडम कहाँ है भाई? दीदी थोड़ी शर्म कर लो, तुम कहाँ आए हो अकेले? एक तो पहले रुको फ्लूम लेने दो। Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? अभी यार ये पूछ रही कि तुम लोगों को ब्रूमस्टिक में 3 की वो लोग तुमको क्यों मिलने आए थे? अब बताओ क्या बोले? They want something I found. I can't say. So I will say I can't say. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I am glad to hear it. This could be dangerous. भाई ये कुछ गलत काम तो करने जा रही है। यार तेरी ऐस की तेजी माइक को क्यों लगता है? भाई का कुछ गलत काम तो करने जा रही है। आप पता नहीं क्या करना है। देखो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 से निकला धागा चोर निकल के भागा रानी की बेटी ऐसी थी रोज आम खाती थी आम से धागा निकल गया I am glad to hear that name. It could be dangerous करो। Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. ओ भाई साहब ये तो खतरनाक काम कर रहे हैं भाई ये तो बस काम कर रहे हैं भाई कुछ तो पेपर चुराने का काम कर रहे हैं मैं इनको करने दूंगा ऐसा मैं क्यों बोलूं मैं नहीं करने दूंगा भाई तुमको करना करो मैं करने नहीं करूंगा भाई मेरी मर्जी है ओ भाई वहाँ पे कुछ तो चल रहा है खतरनाक सा ही काम चल रहा है अरे भाई नाटी उड़ के गई है क्या तू भाई इसको किसी ने उड़न खटोला दे दिया कि झाड़ू वाड़ू क्या उड़ के गई भाई वहाँ पे कुछ तो चल रहा है खतरनाक काम चल रहा है चलो मिलते हैं किधर भाई उस तरफ कुछ तो खतरनाक काम चल रहा है चलो मिलते हैं भाई कुछ खतरनाक हो रहा है मेरे को आवाज आई है ओ भाई ये लोग तो मार रहे हैं को I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! ओ भाई लड़ाई करेंगे I see you. देख रहे हो भाई अब तुम देखो क्या मजेदार मारूंगा ये देखो ऐसे लड़ते हैं बच्चों का खेल है भाई ओ ये क्या था शिट ये तो मैजिशियन है भाई ये तो कोई मैजिशियन है खतरनाक सा I'm not going anywhere with you. Incendio. I've never seen such magic. देख रहे हो Accio. Incendio. भाई ऐसे लड़ते हैं तुमको क्या पता खत्म भाई तेरा खेल खत्म तूने मेरे से लड़ाई करी है रे देख रहे हो भाई ये देखो अभी मेरे से लड़ाई करेंगे इनको क्या उम्मीद है कि जीत लेंगे
भी on ना earth भाई, just happened? Just I've too never pro. been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. भाई साहब ये क्या हुआ था इसको, भाई क्या करने वाले थे भाई, क्यों आ रहे थे सब इसके पीछे, वो Are you समझना all पड़ेगा। right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed... well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. भाई ये बता रही है कि मैं रिसर्च पे अपने कर लेती हूँ काम बिफोर वापस वो लोग आए, मतलब उससे पहले। भाई किस टाइप की रिसर्च है अब हम जानना पसंद करेंगे बाबू मोर्शद। You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Ooh, how extraordinary! I thought Merlin was a myth. नहीं भाई, how extraordinary बोलेंगे। Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. भाई कुछ तो जादुई चीजें बता रही है भाई, पिलर के बीच में बहुत सारे आसपास जगह पे पिलर है भाई, क्या करना आप देखते हैं। I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ओ भाई ये तो मस्त चीजें कर रहे हैं भाई, जादू तो ना मेरे को भी चाहिए भाई। This मैलोस्वीट Yes, take plenty, even if you already have some. भाई यहाँ पे I मैलोस्वीट है, have the चलो ले लेते Mallowsweet. हैं। Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. भाई कैसे प्लेस करूँ मैलोस्वीट, लेकिन दीदी थोड़ा बताओ मैलोस्वीट कैसे प्लेस करना है। अच्छा इधर इधर करना है। मैलोस्वीट यूज, ओके करता हूँ मैलोस्वीट यूज, थोड़े पत्ते फेंक देता हूँ। My word! Did you see that? The Oh, vines what? disappeared. What should I do now? ओह देखो भाई पिलर्स This कैसे हो is गए। uncharted territory. I am curious about these pyres. भाई क्या चल रहा है भाई, अलग ही चल रहा है जादू तो ना। यहाँ पे मैलोस्वीट पे कि खंबे भूल गए, अब क्या करूँ भाई। यहाँ पे एक काम करता हूँ, उसको सारी एबिलिटीज मार के ट्राई करता हूँ। तेरे को पहले एक्सेलियरियन नहीं एक्लियो कुछ नहीं हुआ, लेवियोसो उससे भी कुछ नहीं हुआ, इंसेंडियो ट्राई करते हैं। Incendio. The flames make the pyre sink. ओके तो हमको हर जगह आग लगानी है, ठीक है भाई आग लगा देंगे। आग लगानी तो मेरी काम की चीज है। आग लगा दी 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 आग लगा दी। और भाई सब नीचे हो The गए। pyres are back where they started. व्हाट, वापस ये लोग ऊपर क्यों आ गए। Incendio. भाई यार ये वाले अंदर चले गए, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं गए, क्यों ऐसा। Clearly, all 3 of these pyres are meant to be lit. ओके मेरे को लग रहा है इन सबको ना एक ही बार में साथ से जलाना पड़ेगा। इसको जलाया, फटाफट भागो।
अब इसको जलाओ। ओके, डन 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 डन, लेट्स गो। आई वाज राइट ब्रदर। How beautiful! ये क्या है भाई? कितना मस्त लग रहा है ये। भाई चलो अब इससे बात करते हैं, क्या करना है हमको आगे। I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. ओ भाई, ये देख रहे हो कैसे अपना जादू टोना करके निकल रही है यहाँ से। ओ भाई साहब, कतई जहर भाई, कितना मस्त, क्या टेलीपोर्ट हुई है। आए हाय, मतलब मजे आ गए। तो भाई देखो, अभी हम लोग इधर तो काम कर चुके हैं। अभी हम लोग देखते हैं हमारा अगला टास्क कहीं पे आसपास है कि हॉगवर्ट्स में। अगर हॉगवर्ट्स में तो चलते हैं, पहले निम्नी करेंगे, सोएंगे मतलब आराम से एकदम छोटी छोजा प्याली गुड़िया। फिर उसके बाद उठेंगे, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, तो पहले फटाफट से टास्क देख लेते हैं, नहीं तो भाई अंधेरे में घर कौन जाएगा, फिर मैं टेलीपोर्ट हो जाऊंगा भाई। ओ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेस्ट डायरेक्ट पोशन क्लास ही है और कुछ नहीं बाकी है, तो फटाफट से पोशन क्लास अटेंड करते हैं। लेट्स गो। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई करो बच्चों। हेलो बच्चों। अच्छा, वैसे मैं देखना चाहता हूँ हॉगवर्ट्स में हम लोग पानी में कैसे जा सकते हैं। हम हॉगवर्ट्स में पानी में तैर सकते हैं। ब्रो कितना मस्त भाई, इस गेम को कितना रियलिस्टिक बनाया है। जस्ट लव विद दिस गेम ब्रदर। बस वीडियो कम डालता हूँ। तो चलो भाई, हम लोग आ तो गए हैं सेंट्रल हॉल के यहाँ। अभी हमको क्लास अटेंड करनी है। यार मैं भी पता नहीं क्या अच्छा पागल हूँ, मैंने क्लास अटेंड करने के लिए उसको ट्रैक करने भूल गया यार। क्या यार बाबू, शायद ऐसी गलतियां करेंगे तो कैसे चलेंगे। टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, ऐसे थोड़ी होता है। चलो 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 चलो। Maybe Aurors or someone from the ministry guarding the school after the incident from Hogwarts. ये रही पोशन की क्लास। मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे को लग रहा था इससे भी आगे जाना, ऐसे मस्त गोल गोल घूमते घूमते। चलो 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 चलो। मेरे को लगा ऐसे करना है, पर ये तो हम आ गए। चलो लेट जाते हैं फिर यहाँ पे। क्या हमको पता नहीं क्यों इस गेम में वेट कराने के लिए लेटा देते हैं, देख लो। तो चलो अभी क्वेस्ट बिगिन करते हैं। क्वेस्ट बिगिन। Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. तो भाई लोग, आज हमको बनाना है विगनवेल्ड पोशन। तो विगनवेल्ड पोशन में हमको जो ताकत मिल जाती है उस पोशन से Use a strong, even motion when crushing your ingredients. ठीक है। Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. चलो भाई, मूव 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 हो गया। लेट्स गो।
I see most of you have not forgotten how to stir. हमने बना भी लिया, बहुत तेज हम तो. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. तो भाई अभी इसको प्रोफेसर वीजली ने बोला है कि हमको एक नया टाइप का और स्पेल सिखा दे, तो मतलब पोशन सिखा दे बनाना. तो अभी मैं फटाफट से इसकी क्लासरूम से जाके सामान लेके आने वाली. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? हाँ भाई, you heard correctly. पर मैं इसको बोलूँगा, why do you want to know? इस बंदे के दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रही है क्योंकि. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Bro, भाई ये हमको काम करवा रहा है, मेरे को नहीं भाई, मेरे को ये गंदा पसंद नहीं. I don't know, Gareth. अच्छे से I don't पढ़ाई want to करो get on स्कूल Sharp's में. bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I am sorry, I can't. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. तो भाई यहाँ पे है उसका क्लास, तो हमको भी यहाँ जाना है. क्या कर दिया मैंने, गलती से आग क्यों लगा दी. तो अब ये है उसका क्लास. अभी हमको यहाँ पे पता है कुछ 2-3 चीजें हैं जो कलेक्ट करनी है. ओ भाई ये क्या है? ओ भाई ये तो कुत्ते जैसा लग रहा है भाई. रुको, नहीं ये ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम. सर कॉस्ट्यूम कैसे सकते हैं. अभी हमको पता है क्या क्या कलेक्ट करने के लिए बोला है. कलेक्ट अश्विंदर के अंडे. भाई अश्विंदर एग, अश्विंदर के अंडे आ गए भाई. जानबूझ के पक्का इन लोगों ने इंडियन नाम रखा है, अश्विंदर के अंडे भाई. और ये भी कलेक्ट करना तो हमको. चलो भाई चलते हैं सर के पास, सर को दिखाएंगे. सर मैंने ये कलेक्ट कर लिया. ओह सर को दिखाना ही नहीं है, डायरेक्ट एडरस पोशन बनाना है. तो चलो बनाते हैं भाई, खुद ही बन जाता है. ऐसा थोड़ा मेरे को कुछ ऐसा मेहनत नहीं करनी पड़ती, घुमाने की दो तो मैं कर लूँ भाई. एंड भाई पोशन इज ऑलमोस्ट रेडी. जस्ट अ सेकंड, कितना टाइम बाकी? 5 सेकंड. 4 3 2 1. और इसी के साथ हमारे पास डैश डैश पोशन आ गया. एडरस पोशन नाम है शायद इसका. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. भाई गैरेथ ने क्या करा अभी अभी? What now, Mr. Weasley? कहाँ भाई सर? Professor. That'll be points from Gryffindor again. भाई चलो अभी हमको उसको जाके बताना कि हमने बना दिया एडरस I पोशन. brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all.
next of term. तो चलो भाई, अच्छा है मैंने गैरेथ को मना कर दिया। अभी हमको पता नहीं कहाँ जाना है, देखते हैं फटाफट से हमको क्या करना है। और वैसे ये प्रोफेसर बोल रहा था कि हमको ना कुछ अलग से नई चीज़ लानी मतलब जगह लानी पड़ेगी ऐसी जहाँ पे हम लोग अच्छे से बना सके, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी ऐसे बना के वहीं का वहीं रख नहीं सकते हैं ना, यू नो। अच्छी बात सिखा रहे हैं सर, अच्छी बात सिखा रहे हैं। तो भाई अभी हमको पता नहीं हेडलेस निक, पता नहीं कौन है ये, पता नहीं कौन है, सच में भी कौन है मेरे को सही में भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, पर मेरे को अभी बात करनी है इससे। भाई एक तो पता नहीं किससे हम लोग बात करने हैं, वो सब तो ठीक है भाई, पर ये कहाँ हॉगवर्ट्स के टॉप पे भाई हम लोगों को लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किले के ऊपर आसमानी हिस्से पे नहीं जाते हैं। ओके, तो यहाँ की तरफ जाना है। अब यहाँ से कहाँ? You there? ये कौन है? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. भाई डरा दिया ना भाई। You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. ये बोल रहा है मेरे को फॉलो करो, मैं तुमको मदद कर सकता हूँ। वो मिसिंग पेजेस के बारे में दे सकता हूँ। Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. भाई उसको पता है हम लोग रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में भी गए थे भाई, पहुंचा हुआ बंदा लग रहा है। This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. ब्रो कुछ तो काम करा रहे भाई, हर एक बंदा हमसे कुछ ना कुछ काम कराना चाहता है। क्या है यार, दुनिया में कुछ मतलब रहा ही नहीं है। Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. तो भाई हमको ये बीफ लाने के लिए बोल रहा है किचन में से। अब पता नहीं मेरे को क्या करना चाहिए। मैं तो फिलहाल इसको फॉलो कर रहा हूँ। I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. तो भाई ये हमको बोल रहा है कि भाई इसे खाना वो बीफ कैरी खुद नहीं कर सकता है, तो तेरे को करना पड़ेगा। उसके बदले में मैं तेरे को सीक्रेट बताऊंगा। Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. ओके, तो ये भाई हमको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. Okay. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. भाई ये क्या कर रहे हैं? I'm already imagining Tickle the pear. हमको यहाँ पे pear को से गुदगुदी करनी है, तो हम लोग अंदर चले जाएंगे। मैं कर ही रहा हूँ भाई, कर ही रहा हूँ। ये देखो ऐसे कैसे गुदगुदी कर रहा हूँ। किती 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 किती। ओ भाई खुल गए, दरवाजा खुल गया। ओ भाई साहब, अब हमको rotten beef कलेक्ट करना है उसके लिए। Never will understand students. What could they want? Delicious food. Found themselves a bit peckish, likely. You know certainly makes Rookie's job easier. Here's a welcome treat. Delicious. भाई ये वेलकम टू डिलीशियस, भाई तो हमको खाने की बात कर रहा है यार। हम अब एक काम पे ध्यान दे भाई। हैरी पॉटर मर्च भाई, चलो काम पे ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो तुम भाई? खाना डिलीशियस लग रहा। It smells glorious in here. भाई यार आते जाते मर्च भाई कुछ भी उठा रहे पी रहे, मतलब वो अलग बात है, नहीं कर रहा हूँ पर। Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. ओहो क्या जोक मारा भाई बंदे ने। बंदा बोलता है कि अगर अभी तक कचरा वहां से उठाया नहीं गया, तुमको भाई स्मेल से पता चल जाएगा। देखो आते जाते खा रहा है हैरी पॉटर। कितना बदतमीज है तू हैरी। मर्च भाई ओके भाई, यहाँ पे ये वो रॉटन रोस्ट बीफ मिल गया हमको। A student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah,
sent you, didn't he? Please help yourself. Think he supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. भाई उसको पता चल गया उसके बारे में ठीक है भाई नॉलेज है भाई बंदे की It was nice to meet you. Thank you for the beef. चलो भाई बीफ लेके निकलता हूँ And to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. चलो भाई भागते भागते निकलो भाई टाइम पास नहीं करना भाई It's nothing like बिल्कुल a meal prepared by a house elf. Think he keeps all us house elves in line here in the kitchen? वो ये रहा ये यहीं पर रुका है इसके लिए मैं लाया हूँ भाई Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. भाई हम लोग प्रोफेसर को दिखाएंगे कि हम खुद के दम पे भी सब कुछ कर सकते हैं भाई खुद का दम Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsed. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. लेट्स गो भाई हम लोग आ गए हैं देखते हैं यहाँ पे क्या All in करना good है fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice Oh, leg yeah. of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? अलग ही दुनिया भाई अलग ही दुनिया चल रही है It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the Headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. भाई ठीक है अब हमको खुद से जाना है अब तो वो भी चले गया हमारा सहारा तो चलो भाई हमको वहां की तरफ जाना चलते हैं भाई देखते हैं ये लोग एक तो अपने में अलग ही कर रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है भाई इनका ये देखो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है कहीं ये वो तो नहीं play our little game of hide and seek amongst the pumpkins. तो हमको पंपकिन को तोड़ना है क्या देखते हैं यहाँ पे आके बात करते हैं इनसे किसके पास हमको मिलना है
Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just pumpkin थे, उसके अंदर Jackdaw का head है, तो उनको वो find करना है. Will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. ओके तो भाई अभी ये जो पंकिन थे हम उसको समझ गए. अब भाई इसके अंदर ना जैकडो का भाई सर रहेगा. हमको वो तोड़ तोड़ के देखना है किसमें उसका सर है और हमको उसको 5 बार पकड़ना है. और हमने 5 बार पकड़ लिया तो हम उसको बात कर सकते हैं उससे. देखो तुम अब भाई तुमको पता नहीं है मेरा दिमाग देखो. भाई अब तक मैंने 0 टाइम फाइंड किया उसको. जो हिल रहा है उस पे मारते हैं. 1 टाइम हो गया. अब मैं समझ गया भाई. अब मैं ट्रिक समझा. जो हिल रहा रहेगा उस पे करना है. जो भाई पंपकिन हिल रहा रहेगा उस पे करेंगे. रुको नहीं हिल रहा अभी. ये रहा. एक और बार फाइंड कर लिया. लेट्स गो. देखो भाई 2 बार फाइंड कर लिया. अभी इसको देखते हैं अगली बार. देखते हो कहाँ रहा है ये. अब ये कहीं पे तो हिलेगा. जहाँ ये हिलेगा वहीं पे करना है हमको. I could do that too if I had a wand. And a body. ये रहा. ये 3 बार कर लिया भाई. आखिरी बार बस भाई. आखिरी बार. ये रहा. मिल गया. लेट्स गो. 5 बार कर लिया. लेट्स गो. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go. ओके तो फॉरबिडन फॉरेस्ट के यहाँ से हमको ये आगे का रास्ता दिखाएगा केव के अंदर जाने का, जहाँ पे हमको भाई वो पेजेस मिल सकते हैं. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first, but Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Okay, brother. See you at the forest edge. ओके सो भाई मैं फिलहाल हॉगवर्ट्स में जो आ गया हूँ, तो भाई फिलहाल मेरे को पता है कि आप लोगों को बहुत इच्छा हो रही है कि देखें फॉरबिडन फॉरेस्ट के यहाँ पे क्या हुआ, केव में क्या हुआ, अंदर क्या हुआ. हम लोगों को केव के अंदर जाके पेपर मिले कि नहीं मिले, क्या पता मिले हो या क्या पता नहीं मिले हो, मुझे भी नहीं पता भाई. तो फिलहाल बस आज की वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो जरूर से देखना. अगली वीडियो में हम लोग जाने वाले केव के अंदर और वो वाले पेजेस जो है कलेक्ट करने वाले. तो फिलहाल बस आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो से लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और भाई ये एक वॉक थ्रू पार्ट था, ऐसे ही मैं अभी से वॉक थ्रू पार्ट डालने वाला हूँ इस हॉगवर्ट्स लेगेसी के. तो चलो बराबर से बाय बाय, जय हिंद जय भारत बोल के निकलते हैं.